Then come to the next microbial inoculants that is suitable for rice. Not rice means lowland rice where transplanting is there. So blue-green algae is a very useful biofertilizer for the rice. It is known as a cyanobacteria, are considered to be a oldest free living microorganism on the earth. It is photosynthetic nitrogen fixing. आप अपने घर में किसी गिलास में धूप में पानी रख दें, 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद उसमें अगर एक भी स्पोर होगा एल्गी का तो ग्रो होकर ग्रीन हो जाएगा। या फिर आप देखें जिस पाइप से हम पानी को हमेशा ड्रेन करते रहते हैं वो पाइप भी ग्रीन हो जाता है। तो एक स्पोर भी अगर आ जाएगा और उसमें सनलाइट अगर मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस करके और वो ग्रो कर देता है। They use energy derived from the photosynthesis to fix the atmospheric nitrogen up to 30 to 35 kg per hectare, that is 65 to 70 kg of urea you can save through this biofertilizer, about 75 kg of chemical fertilizer. It found at almost all climatic condition. The common species are most suitable species is nostoc, olocera, Tolpothrix and Anabina. These 4 type of blue-green algae is suitable for almost all type of agroclimatic condition covered in the whole country of the India. So if you use any strain that is suitable for all agroclimatic condition, but combination of the 4 strain is more suitable. अगर एक काम नहीं करता है तो दूसरा काम करेगा. That's why we are preparing mixed culture for the farmers. This is the technology for the mass production. You can also make it without any instrument, without involving much more economics. So it is a very easy. You can prepare a 2 meter by 1 meter by 15 centimeter length of the galvanized tray or cemented tray, और खेत में कहीं गड्ढा खोद करके प्लास्टिक शीट बिछा के भी हम कर सकते हैं इसको। एंड इसमें 2:1:15 सेंटीमीटर galvanized शीट में आपने 10 kg sandy soil, that is fertile soil, not sandy soil. Loam soil is very suitable, but in the Jharkhand sandy loam soil is available. So 10 kg of soil, 200 gram of superphosphate and 2 gram sodium molybdate as a nutrient and as a fixer of the atmospheric nitrogen also. Fill in the tank with the water up to 10 to 15 centimeter because your tray is depth about 15 centimeter. The content are mixed and allowed to stand the supernatant for the till the water become clear. Then broadcast the 200 gram अंदाज से 200 gram of quality starter culture procured from the any agriculture university, KVK and government organization on the surface, and periodically add the water to maintain the water level till the algal map is formulated. Then algal map is formed, stop the adding the water and wait for the dry. When completely dry, collect the algal mat in the polythene bag, cloth bag, etc. And the shelf life of this blue-green algae is about at least 2 years. So after 2 years, you can again use this blue-green algae for the production and for the use of as a biofertilizer. This is the method of the field application. What is the rate of the field application? How much quantity is required for the hectares of land or acres of land? The algal culture is applied 10 kg per hectare over standing water in the field 1 week after transplanting. Transplanting के 1 सप्ताह के बाद you can use this microbial culture. The field is kept waterlogged at least for few days after application of the algal biofertilizer. That's why we are advocating that this blue-green algae is suitable for the submerged condition or lowland condition. If water is not there, the condition of their blue-green algae is not provide congenial atmosphere to multiplication and growth and act as a nitrogen fixture. Then precaution in the mass production of the BGA, waterlogged condition is the first need. Then proper sunlight because it is a photosynthetic plant. Then single superphosphate is added as a phosphorus source
Lime should be added if soil is very acidic. Then this is the field application method of blue-green algae. What is the methodology? What happened after incorporation of blue-green algae, and which is the appropriate time for the application of this algae? The algae are applied at the rate of 10 kg per hectare in the submerged condition. At that time, water logging is very important, and after a week of transplanting, you can spread 10 kg of algal mat on the surface of the water, and within a week, depending upon the sunlight, you can see algal mat, green mat, just like a green chadar. You can see, and you can see it is a like of green water, greenery water. These are some precautions for the production, like sunlight is very important. Superphosphate is use is important. Neither it is not grow and not develop as per your expectation. Then lime is a very needed if your soil is acidic. If not acidic, not acidic, there is no use for the lime. Then you can see here use of the sodium molybdate and SSP in the tray. ट्रे में कैसे हम एल्गी के प्रोडक्शन के लिए इसको स्प्रेड करेंगे और कैसे इसको मिलाएंगे. ये सीट आप गैल्वेनाइज का भी ले सकते हैं, सीमेंट का भी बना सकते हैं, या खेत में गड्ढा खोद के अगर हमारे कोई ऐसे किसान करना चाहे तो उस साइज़ का गड्ढा खोद के नीचे प्लास्टिक का सीट डाल के भी इसको कर सकता है. उसके बाद इसको इरिगेट करना है अप टू 8 to 10 सेंटीमीटर, बिकॉज योर ट्रे इज डेप्थ इज 15 सेंटीमीटर. You can see here a very good algal mat. Is the picture of my Department of Soil Science, Agriculture, Chemistry. You can see here this is the green mat on this whole tray surface. So it is a symbol of the growth of the algae. You can see here, if incorporate in the rice field after transplanting of 10 days, after a week, if sunlight is there, fully sunlight, you can see the structure of the blue-green algae. It is a very important microbial inoculants for subland rice and fixed atmospheric nitrogen about 25, 30 or some cases 35 kg per hectare. Then farmers अगर ऐसा जिसके पास पैसा नहीं है फिर भी वो प्रोडक्शन करना चाहता है, you can go for the plastic culture. आप गड्ढा खोद लें उसी साइज का. ये हमारे फील्ड का है, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का. किसानों ने इसको किया है और इसी में है एल्गी कल्चर को हमने डाल दिया और विद इन ए वीक एक मैट बन जाता है, जिससे आप प्रोडक्शन करके अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं. केमिकल फर्टिलाइजर जो परचेज करते हैं, यू कैन सेव दिस केमिकल फर्टिलाइजर. एंड इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑल्सो. जो ऑर्गेनिक कल्चर, ऑर्गेनिक खेती हम कर रहे हैं, बायो फर्टिलाइजर इज़ अ मेन कंपोनेंट फॉर द ऑर्गेनिक फार्मिंग. इसलिए कि केमिकल हमको डालना नहीं है. तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के लिए ऑर्गेनिक सोर्स क्या क्या है? दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल. बायो फर्टिलाइजर एंड ऑर्गेनिक मैन्योर दैट इज सुटेबल फॉर दिस ऑर्गेनिक कल्टीवेशन. दिस इज द एल्गल मैट. ड्राई होने के बाद यू कैन कलेक्ट दिस एल्गल मैट. ऊपरी सरफेस को आप यू कैन कलेक्ट कर सकते हैं एंड यू सेव इन द पॉलिथीन बैग और क्लॉथ बैग्स. दिस इज द एल्गल मैट इन द राइस फील्ड in the W section, Department of Genetics and Plant Breeding, Birsa Agriculture University. If you use this blue-green algae regularly 3 to 4 years, then after no need of application of the BGA culture, वो पूरा खेत में उसके सीड जो है इस्टेब्लिश कर जाते हैं. और जब भी आप वैसा क्लाइमेट आएगा, क्लाइमेट कंडीशन आता है राइस के केस में, तो अपने आप ग्रो करके पूरे खेत को कवर कर लेता है और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है और प्लांट का जो यील्ड है उसको इंक्रीज करता है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेकन बाय द माइक्रोस्कोप, दैट इज anabenized structure. This is the algal structure, and you can see in your practical classes. If you visit Department of Soil Science, you must see in this slide or structure of the blue-green algae. Okay, very good morning. Today we are discuss about the phosphatic fertilizer, and it is the part course content of the second semester undergraduate classes. Agricultural comes under the agricultural microbiology. So we are discuss today phosphatic fertilizer as phosphatic organic fertilizer, phosphatic biofertilizer. What happened? What is the use?
what is the suitability, which type of microorganism is suitable for solubilize the maximum fixed phosphorus. This is a very clear phosphate solubilizer microorganism, or you can say phosphate solubilizing bacteria also. It is a two type. It comes under the bacterial category and comes under the fungal category also. So in the bacterial category, phosphate solubilizing bacteria, Pseudomonas and Bacillus species is a very compatible to fix the to solubilize the fixed phosphorus. In the fungal category, Azospirillum avamori, Fusarium species and Bacillomyces fusarium. These are the three more efficient strains of the phosphate solubilizer, which is capable to fix the atmospheric not solubilize the fixed phosphorus in the soil, especially in the acid soils. And you know, in the acid soil, large proportion of the phosphatic fertilizer applied in the topsoil, and it fixes in the soil by converting into tricalcium phosphate. Then it is the insolubilized form that is not utilized by the plant. Then this bacteria is capable to solubilize. As you know, in the acid soil, 10 to 15% of phosphatic fertilizer is used by the plant. Rest about 80% that is useless for the plant. So this bacteria or fungus is capable to solubilize about 25 to 30% fixed phosphorus and provide to the plants. This biofertilizer is useful for almost all the crops. It may be cereals, pulses, leguminous, non-leguminous, acid soil or any other soil where phosphate is a problematic. You can see here, these are the some bacterial colony. How you can assess? In case of Azotobacter, this bacterial colony become a bluish after a week. It's create a pigment, black color pigments. In the Azospirillum case, the bacterial colony is almost like a rhizobium, like a blue, translucent, opaque, and milky color is the colony is formed by the Azospirillum bacteria. And in case of phosphate solubilizing bacteria, you can see here this plate. Here we plot the filter paper and give the tricalcium phosphate for the solubilization of the bacteria and introduce phosphate solubilizing microorganism. In our laboratory we are using Pseudomonas strata, that is a good phosphate solubilizer, and introduce in this petri plate, and you can see this phosphate solubilizer is create a halo zone where we apply the tricalcium phosphate that is insoluble form, and it's utilized as a dicalcium, convert in the dicalcium phosphate that is soluble form and utilized by the plant. ये इसको खा करके हेलो जोन बना देता है और आपको देख के लग जाएगा कि ये बैक्टीरिया वर्क कर रहा है. इसी तरह ये सॉइल में जाके वर्क करता है. Then come to the other microbial inoculants like AM mycorrhiza. Earlier this name was VAM, vesicular arbuscular mycorrhiza, but at present this nomenclature has been changed and known as only arbuscular mycorrhiza, and it is denoted as a symbiotic association between plant root and fungal mycelia. The root infected by AM fungi are the associated increase the mineral absorption by mycorrhiza, and it reduces the intensity of disease. This is the beauty of this microbial inoculants. It reduce the intensity of the disease. मतलब बीमारी को भी ये चेक करता है और बीमारी को बढ़ने से फैलाता है. You can also use seed treatment for the check the disease of the plant. So it improves the plant health, and due to efficient balance use of applied fertilizer, especially if you are using rock phosphate, it's a very good source to solubilize and provide to the plant. So arbuscular mycorrhiza, the main species or main strain of this arbuscular mycorrhiza is the Glomus fasciculentum, Glomus mosesi, and Gigaspora is a very important and selected strain and efficient for the phosphate solubilizer as well as micronutrient mobilizer.
You can see here this arbuscular mycorrhiza. If you study the root cortex of the any host plant like lychee or any grasses, you can see here this mycorrhiza enter in the root cortex and make a segment, just like you can see here. Here this is the spores of the mycorrhiza, and after entering the root cortex, its work for mobilizing and solubilizing the plant nutrients. And this is the crop response of the biofertilizer in vegetable crops. This is assessed in our so many universities work on this aspect and find out the result that if you use the biofertilizer, it's increased the vegetable yield about 18%, especially pea and onion, followed by the tomato and ginger. It's very useful in the onion and in case of pea and tomato as well as ginger. So after using this biofertilizer, that is suitable biofertilizer, means Azotobacter is suitable for the vegetable crops, and after using this Azotobacter, the yield is also increased about 15 to 20% as you see in the slide. The question arises, what is the benefit we achieved? क्या फायदा है इसको यूज करने से? You can see the economics of the biofertilizer. If you use the 1 metric ton of biofertilizer, we take the example for the state or nation. अगर हम 1 metric ton biofertilizer का यूज करते हैं, that 1 metric ton biofertilizer is 100 to 400 ton of urea. If the phosphorus fixation capacity is only 50 kg per hectare, although the nitrogen fixing capacity is 350 kg per hectare, but on an average in the farmer's field 40-45 kg to 60 kg, but we calculate on the fixation capacity is 50 kg per hectare and found that 1 metric ton of rhizobium is equivalent to 100 to 400 metric ton of urea. Then 1 metric ton of Azotobacter and Azospirillum, both the fixing capacity is 25 to 30 kg per hectare. It save or equivalent to chemical fertilizer 10 metric ton of urea, because it's this organism is suitable for the nitrogen fixation. If the nitrogen fixation is 20 kg, but we are advocating about 20 to 25 kg. 1 ton of Azotobacter. Azotobacter is just like Azotobacter. Azotobacter is suitable for the vegetable and cereals, but Azotobacter is suitable for the sugarcane also. And 1 metric ton of Azotobacter fixing capacity is 200 to 300 kg per hectare. It save or equivalent to 80 to 120 metric ton of urea. In case of phosphate solubilizing bacteria, 1 metric ton of phosphate solubilizing bacteria save about 102 metric ton of DAP, diammonium phosphate, that is about 12 to 15 rupees per kg. If the solubilization capacity is 40 kg per hectare, 40 kg per hectare अगर इसकी solubilization capacity है, तो 1 metric ton अगर हम अपने स्टेट में यूज करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम 100 metric ton DAP को सेव कर रहे हैं. So this is the economics of the biofertilizer, and now think how it is economic, how it saved the chemical fertilizer. What happened? Chemical fertilizer, if you use the less chemical fertilizer, then you save the soil health also, because we are talking about the organic farming. This is the main component of the organic farming. If you use this bacterial culture, you can not save the money, you can also improve the soil health, as well as soil health and other beneficial rhizospheric benefits also available by the use. The quality control of biofertilizer. बायोफर्टिलाइजर मार्केट में अवेलेबल है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो बना रही हैं, प्राइवेट्स भी बना रहे हैं, गवर्नमेंट भी बना रहे हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज आल्सो प्रोड्यूसिंग दिस बायोफर्टिलाइजर. तो व्हाट विल बी द क्वालिटी कंट्रोल? कोई लगाम है इनके ऊपर, या फिर जिस चाहे जो चाहे वो बना सकता है? सो वी आर डिस्कस टुडे अबाउट क्वालिटी कंट्रोल. इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर माइक्रोबायोलॉजी क्लास. सो व्हाट इज़ द क्वालिटी कंट्रोल? हाउ कैन डिफाइन क्वालिटी कंट्रोल? आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिसके ऊपर ISI का मुहर लगा रहता है. व्हाट इज़ दिस? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट का एक मोनो है, जिसके लगने के बाद ग्राहक को ये श्योर किया जाता है कि क्वालिटी इज़ वेरी गुड. सो इट इज़ यू कैन डिफाइन टेक्निक्स एंड एक्टिविटीज़ विच मॉनिटर ऑल प्रोसेसेस of the quality system which are directed as
eliminating causes of unsatisfactory performance in order to achieve economic effectiveness, that is design check, inspection and inspections and test. Quality control is an integral part of the quality assurance. It means you can define the operational techniques and activities that are used to fulfill the requirement of the quality. ग्राहक को एक एश्योरेंस देना कि जो हम बोल रहे हैं, जो इसमें लिखा हुआ है, कितना नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, किस क्रॉप में करेगा, सेल्फ लाइफ कितना होगा, उसका एक एश्योरेंस जो देता है, जो इंस्टीट्यूशन जैसे इंडिया में ISI है, उसको ये क्वालिटी कंट्रोल कवर करता है. सो व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट और मेन रोल ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल? The quality has to be controlled at various stages of the biofertilizer, like mother culture stage. जब हम isolate करते हैं नोड्यूल से और टेस्ट ट्यूब में उसको क्रश करके और ट्रांसफ़र करते हैं एंड प्रिपेयर एज ए मदर कल्चर, उस कंडीशन में उस स्टेज में इसको चेक करना है कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है, कंटामिनेशन तो नहीं है, और यू कैन एश्योर द बैक्टीरिया इज efficient for the nitrogen fixation or not. It is capable to fix the atmospheric nitrogen or not. Then fixing the broth with the carrier. जो ब्रॉथ हमने लिक्विड मीडिया बनाया उसको जब हम मिक्स करते हैं कैरियर के साथ, उस स्टेज पर इन्फेक्शन तो नहीं कहीं बाहर से आ गया, हम कंजेनियल इन्वायरमेंट और एसेप्टिकली इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसको देखने की ज़रूरत है. देन कैरियर सिलेक्शन एंड स्टराइजेशन. कैरियर earlier we are studying on the earlier classes, though this more suitable carrier is the lignite, charcoal, compost, press mud, etc. So which one is the very suitable? If carrier material is not suitable, the proper growth of the microbes is not possible. So it is a very critical stage of the microbial mixing stage. If environment is not free from the other microbes other than this useful microbes, then these other microbes enter in the carrier and destroy the beneficial microorganisms. So in this stage is very important. Then during packing and storage, at the time of packing of the biofertilizer and time of storage, it is very important to check the contamination. Then random sampling test at the farmer's level. जो हमने लॉट बनाया, फार्मर्स को सप्लाई किया, हम कभी बीच में उसमें से एक आध सैंपल जाके सर्वे करके ले लें, या जो पैकेट्स देने वाले हैं फार्मर्स को उसका एक पैकेट उठा के रैंडम टेस्ट कर लें कि उसमें सीड लोड कितना है. सीड लोड एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ द राइजोबियम कल्चर इज एटलीस्ट 10 to the power 7 एट द टाइम ऑफ पैकिंग, बट आफ्टर अ वीक इट्स बिकम एटलीस्ट 10 to the power 9. तो इतना अगर माइक्रोबियल लोड्स नहीं होगा, देन इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर द इनोकुलेशन. You can see the Indian standard specification for the rhizobium culture especially, and that is fixed by the different committee, scientific committee, ki what is the criteria for the good quality of rhizobium culture. The first one is base, that is a carrier is a very important, that here we discuss. Then viable cell 10 to the power 9, you can see here at the time of preparation. After 15 days of manufacturing, it should be at least 10 to the power 9 cells per gram of carrier material. Then cell number at the time of expiry. The shelf life of this carrier biofertilizer is only 6 months. We are talking about carrier based microbial inoculants. In the market, two type of microbial inoculants are available. One is a liquid based and second one is carrier based. Here today we are discuss only carrier based. Next class we will discuss about the liquid based. So in the carrier based, the time of the expiry, at the time of expiry, the cell count per gram carrier is 10 to the power 7 cells. Then permissible contamination, no contamination recorded at the time of 10 to the power 8 dilution. Then pH should be 6.5 to 7.5 of the carrier materials, including microbes. Moisture 35 to 40%, not less and not high, not increase about up to 40%. Then stain should be checked by several tests like serological and other, that is
done by the universities or producing agencies. Then carrier material should be particle size is 150 to 212 micron or 80 to 100 mass. It's just like a talcum powder. If particle size is just like powder, the number of microbes, number of cells stick on this every particles. So number of population may be increased. Then pot culture test for the nodulation ability. It is a very important before goes this culture to the farmers. The pot culture or nodulation test is very important. So these are the quality control measures fixed by the Indian standards of the country for the rhizobium culture. Similarly, these are some recommendation of the different stages. What happened if you before this production or go for the any research work, it is a need to test the microbial inoculants like broth culture stage. Which type of test is beneficial in the broth culture stage? The first one is Congo red test, then acetalkyline production test, growth on glucose peptone media, then Hofer alkaline test, lactose agar test, Leonard-Jart assembly test, plant test, and lastly viable plant counts. So these are the different stages of the quality control. It is very important for the any microbial producing agencies. This is the also part of the quality control that is fixed by the committee, ISI committee. What type of information printed on the packet of the biofertilizer? That is the name of the product, especially as a rhizobium or in the any like Azotobacter, PSB, Azospirillum, etc. Then leguminous crop for the which intended, किसके लिए आपने बनाया, नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर किसने बनाया, ताकि क्वालिटी कंट्रोल अगर कोई प्रॉब्लम है यू कैन गो फॉर द कंप्लेन आल्सो. देन टाइप ऑफ द कैरियर, किस टाइप का कैरियर आपने यूज़ किया उसको मेंशन करना जरूरी है. बैच और कोड, किस लॉट का कल्चर किसको आपने दिया, तो हर दिन का एक एक लॉट होता है. एक लॉट में अगर 1 लाख पैकेट 10,000 पैकेट बनता है उसका लॉट नंबर अलग होगा, ताकि जब आप कंप्लेन करें तो प्रोड्यूसर उसको चेक कर सके. देन डेट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड डेट ऑफ द एक्सपायरी, सो दैट फार्मर्स नोन कि कब इसको यूज़ करना है, किस डेट के पहले. Net quantity meant for the 0.5 hectare. Here in the our department of soil science, we are preparing 100 gram packets, 100 gram of packet of the rhizobium, Azotobacter, Azospirillum, and PSB. Because our land holding in the state farmers is only maximum 0.5 hectare. So that we are preparing for the 0.5 hectare. Then storage instruction in the bold letter worded as storage in cool place away from the direct sunlight. As you know, sunlight having ultraviolet rays, so it has a capacity to destroy the beneficial microorganism. So that इंस्ट्रक्शन ये होना चाहिए कि आप इसको धूप से बचाएं और ठंडे जगह पर रखें. Then each packet may also be marked with the ISI certification mark. If you have producing large amount of biofertilizer, तो आपको सर्टिफिकेशन कराना होगा, और सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप अपने प्रोडक्ट को ISI का बैच पर मुहर लगा सकते हैं कि आवर प्रोडक्ट इज सर्टिफाइड बाय द ISI एजेंसी. देन आफ्टर यू कैन सोल्ड दिस बायोफर्टिलाइजर to the farmers or in the market. The available information should be printed on the colored pink background. Visibility बढ़ाने के लिए you can print this all messages on the green surface or yellow surface or blue surface, that is visible, 100% visibility. Then what happened? What is the problem? Why not our farmers using this biofertilizer? I think about 20-25% farmers is using the biofertilizer in whole country, but in the Jharkhand I think it is a less than 25%. Then what is the problem? Why farmers are not using? These are the reasons of the problems of the not use the biofertilizer. Unawareness. Farmers को पता नहीं है क्या होता है, कितना फायदेमंद है, and unavailability of the biofertilizer to the farmers field. उनको मिलता ही नहीं है, उनको अगर डालना भी हो तो उनको नहीं मिलता है. Then some
टाइम पुअर क्वालिटी ऑफ बायो फर्टिलाइज़र। फार्मर्स ने अगर कहीं बाहर से खरीद लिया और ख़रीदने के बाद वो काम नहीं किया, कोई डिफरेंस नहीं दिखा जिसमें उन्होंने डाला जिसमें नहीं डाला, तो फिर उनका विश्वास है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर वो परचेज नहीं करेंगे। तो पुअर क्वालिटी का सप्लाई होता है जिसकी वजह से फार्मर्स यूज़ नहीं करते हैं। देन एक्सपायरी डेट ऑफ द इनोकुलेशन रीच टू फार्मर्स विच आर इफेक्टिव। एक्सपायरी डेट का हम दूसरा मुहर मार के सप्लाई कर देते हैं, वो भी एक रीज़न हो सकता है। देन अनसुटेबल ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज सिस्टम मे क्रिएट हाई टेम्परेचर विच डिस्ट्रॉय द माइक्रोबियल पॉपुलेशन। अगर आप उसको धूप में लेके जाएंगे, धूप में रख दिए, ट्रांसपोर्ट करते समय धूप लगा उसके ऊपर, सो माइक्रोबियल इनोकुलेंट्स मे बी डिस्ट्रॉय as per their population fixed by the ISI, that is 10 to the power 9. At least it's become after treated with the sunlight specific rays like ultraviolet, it's become 10 to the power 7. So these are the some problems created for the biofertilizer use. Azolla, you have heard this terminology, azolla. Azolla is a type of biofertilizer. It is a free floating water form that floats in water and fixes atmospheric nitrogen. About 79-80% nitrogen is useless for the plant. It is capable to fix the atmospheric nitrogen into the soil, and it is associated with the nitrogen fixing microorganisms like Anabaena azolla. As you know, the Anabaena azoli is the popular name, is Anabaena azoli because it is the association with the blue green algae and azolla. Then azolla is used for wetland rice. Wetland means submerged condition rice, जहाँ ट्रांसप्लांटिंग हम करते हैं, जहाँ पानी लगा रहता है उस समय के लिए। एक तो होता है डायरेक्ट सीडेड जो अपलैंड में करते हैं, इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर द अपलैंड राइस। फॉर द अपलैंड राइस एजोस्पिरलम एस्टोबैक्टर इज सुटेबल एंड it is only specific for the lowland rice, that is submerged rice. एंड झारखंड के भाषा में बोले तो दोन के लिए, दोन में जो ट्रांसप्लांट करते हैं उसके लिए ये बहुत बढ़िया बायो फर्टिलाइज़र है। देन इट फिक्सेस अबाउट 25 to 30 kg nitrogen per hectare. It equivalent to 60 to 70 kg of urea. You calculate the how much cost you save through this biofertilizer. The azolla is a, we are selling in our department of soil science and agriculture chemistry 20 rupees per kg, but farmers are developing himself this azolla. There is no need to purchase from any university or KVK and other organization. So you produce yourself without investing any penny rupees. So the common species are found in India also, that is prompt species of the azolla like Pinnata, Coralliana, Azolla fasciculide, Azolla mexicana, Azolla rubra, Azolla microphylla, and these strain we procured from the Indian Rice Research Institute, Cuttack, and in our laboratory we maintaining this 6 species for the biofertilizer production and for the use of our respective farmers. Then common composition of the azolla, what is the content is found in the azolla, that is approximate azolla body having a 94% water, then 1% phosphorus, potassium, calcium, manganese and 5% nitrogen. Azolla not using only as a biofertilizer, it also used as a organic manure also. जब ये धान के खेत में जब ये बढ़ता है, इसकी बढ़वार हो जाती है, तो फिर ये उसी में डिकम्पोज होके फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करता है, एज ए ऑर्गेनिक मैन्योर देता है। You can see this is the structure of azolla, Azolla pinnata. Azolla pinnata is a indigenous species. ये भारत में पाए जाने वाली अजोला है, और आप देखेंगे कि हमारे झारखंड के खेतों में, झारखंड के गांव के खेतों में ये अवेलेबल मिलेगा आपको, जहाँ पानी तालाब है उसमें अवेलेबल मिलेगा। हम लोगों ने कुछ फार्मर्स फील्ड पे काम कर सर्वे वर्क करने गए थे एंड फार्मर्स आर फिल्टरिंग दिस प्लांट
मच्छरदानी लेकर के खेत के धान के खेत में वो उसको छान करके निकाल रहे थे। हमने उनसे पूछा कि आप क्यों कर रहे हैं, तो उनका जस्टिफिकेशन था कि ये हवा धान के जड़ में हवा जाने से रोकेगा, इसलिए हम इसको छान के निकाल दे रहे हैं, ये बेकार चीज़ है। फिर हम लोगों ने उनको समझाया, एक ट्रेनिंग दिया कि इट इज़ द मोर यूज़फुल, वेरी यूज़फुल फॉर द राइस क्रॉप। आप जो यूरिया डालते हैं उस यूरिया को कम डालिए, जितना डालते हैं उसका 60% डालिए, 40% ये दे देगा आपको नाइट्रोजन। और इससे क्या है, खेत की स्थिति जो सॉइल हेल्थ है वो भी इम्प्रूव करेगा। आने वाले समय में आपकी मिट्टी अच्छी बनी रहेगी, अगला क्रॉप भी अच्छा होगा। तब उनके समझ में आया कि ये कितना यूजफुल है। तो जो इंडिया में जो वैरायटी पाई जाती है दैट इज अजोला पिनाटा, ये इंडिजिनस वैरायटी है। और इंडिया के इस एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन जो भारत का है उसमें ये ग्रो करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए सुटेबल है। You can see here, earlier we discussed about the type of azolla available and most efficient strain of the azolla available in our university as well as in the country, that is Carolina. You can see the structure of the leaf. Then Mexicana, rubra, azolla pinnata, it is an indigenous variety. Then azolla microphylla and azolla fasciculi. So azolla pinnata and microphylla is doing better in this agroclimatic condition, Jharkhand agroclimatic condition, and the multiplication rate is very high comparison than this other species. So it is recommended for the farmers. Pinnata and microphylla is a very good strain of this azolla for this, suitable for the Jharkhand. Then we want to discuss about, we are I think in third or fourth class of biofertilizer. So biofertilizer, as you know, it is a very good substitute, alternative of the organic manure, organic farming. So here we want to discuss, so INM, integrated nutrient management, for your knowledge sake, because you are going to participate in some competitive exam. So it is a very important to know about the, to know brief about the integrated nutrient management, because azolla is a very important part of this nutrient management. So the INM, you can define the name of component required for the INM. First one is, that is a fertilizer. Integrated nutrient means along with the chemical fertilizer, not organic manure. It is in part of the inorganic, because at present the varieties developed by the breeders, plant breeders, especially hybrid and high yielding, that needs huge quantity, huge amount of nitrogen, phosphorus and potassic fertilizer. So it is not possible to supply the nutrient through this biofertilizer, because biofertilizer supply only in case of nitrogen 50-60 kg nitrogen, then azospirillum astrobacter 25 to 30 kg, azolla again 25 to 30 kg. But crop, in case of maize, what is the requirement of the nitrogen in the maize? That is more than 150-60 kg per hectare. Similarly, phosphatic fertilizer 80 kg and potassic fertilizer 80 kg also. That's why they perform the very good as per your expectation. So inorganic fertilizer is a first component of the INM. Then secondary nutrient source. If deficiency is there, as in our survey, our delineation work done by the Department of Soil Science and Agriculture Chemistry, we have find out the deficiency of the boron, zinc and sulfur. About more than 30% soils are deficient in sulfur, boron and zinc. So as per need, secondary nutrient is very important. Then micronutrient, iron, copper, zinc, manganese, it is also very important for the crop growth. So as per need, it is a part of this INM. Then soil amendment, if your soil is acidic, alkaline and any problematic soil amendment is very important. That's why you can harvest the maximum targeted yield. Then FOM and R, compost, it is a very good organic manure and very good component for the INM, because as you know, chemical fertilizer is only supply the selected nutrients like
nitrogen, phosphorus and potassium, maybe sulfur, maybe zinc, about maximum 5 nutrient. But in the organic manure it may be compost, FYM and others, or vermicompost. Plant receive almost all type of plant nutrient that needs for the plant. How much? That is 17 element. At present I think one element added, 18 element, but 16, 17 is more important for the crop growth. That's why जो हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं उसके प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, स्वाद अच्छा होता है, कीपिंग कैपेसिटी इज़ वेरी हाई, बहुत दिन हम रख सकते हैं। इसलिए कि एक ऐसा खेती कर रहे हैं जिसमें हम केवल NPK डाल रहे हैं, 3 न्यूट्रिएंट डाल रहे हैं। दूसरा खेती ऐसा कर रहे हैं जिसमें हम 15-16 न्यूट्रिएंट डाल रहे हैं, भले ही उसका कंसंट्रेशन जो है FYM में 0.001 है, लेकिन है, इट विल बी देयर। बट इन द केमिकल फर्टिलाइजर वी आर सेलेक्टेड NPK, सल्फर एंड अदर्स। तो जिसमें हम ज़्यादा न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहे हैं, जिसकी आवश्यकता ज़्यादा है, वो प्रोडक्ट भी अच्छा होगा, टेस्ट अच्छा होगा, कीपिंग क्वालिटी अच्छा होगा, उसका फ्लेवर महक जो आता है वो भी अच्छा होगा। सो कंपोस्ट इज़ अ वेरी गुड इम्पॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर द INM, नॉट ओनली फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन, it will also help to give the rhizospheric environment compatible for the plants. Then crop residue and green manure. Green manuring also is a very important component for INM. आप अगर अपने खेत में ग्रीन मैन्योरिंग कर देते हैं, it's not only increase the plant nutrient content but also change the soil texture, structures and other environment of the soil. So green manuring, and at present there is a problem in our country, in India, Punjab, UP, including Jharkhand, Bihar, these states are burning the crop residue. About 80% farmers are burning the crop residue. वो इजी है, ऐसे उनको काटना पड़ेगा, कंबाइन से वो केवल हार्वेस्ट कर लेते हैं, चाहे पैडी हो चाहे वीट हो, ग्रेन रख लेते हैं। अब प्रॉब्लम होता है कि उस जो रेस्ट बच गया उसका क्या करें। अब उसको अगर वो भूसा बनवाते हैं, कटवाते हैं कंबाइन से, तो पैसा लगेगा। किसी और फॉर्म में उसको चेंज करना चाहते हैं तो फिर पैसा लगेगा। तो बेटर है कि एक माचिस की तिल्ली मार दीजिए, पूरा खेत जल जाता है, खेत कल खाली हो गया, कल से उसकी सिंचाई कर दीजिए, प्लाविंग कर दीजिए और बॉयल शुरू कर दीजिए। तो हरियाणा में, पंजाब में, यूपी में, बिहार में ये प्रैक्टिस बहुत धड़ल्ले से हो रहा है। और आप सुने होंगे कि दिल्ली के शहरों में उसका जो धुआं उठ रहा है वो आके पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है। तो इट इज़ एग्जाम्पल, INM में उसका आप यूज करें क्रॉप रेजिड्यू को, उसी क्रॉप को उस खेत में मल्टीप्लाई कर दें। और अगर हो सके तो ट्रैक्टर में बहुत सारे अटैचमेंट आते हैं जो उस क्रॉप्स को जो है वो चॉपिंग कर देते हैं। जब क्रॉप बड़ा रहेगा उसका डंठल तो देर में सड़ेगा, चॉपिंग कर देगा तो माइक्रोबियल इफेक्ट जो होता है एक एंड से दूसरे एंड पर ज़्यादा होता है, इंड्स टू इंड ज़्यादा होता है, बीच में कम होता है। तो छोटे छोटे पीस जब कर देंगे तो जल्दी डिकम्पोज करेगा। मार्केट में बहुत सारे सेलुलोज डिकम्पोजर, लिग्निन डिकम्पोजर अवेलेबल हैं। जैसे सेलुलोज डिकम्पोजर में आप अभी ट्राइकोडर्मा विरिडी ले लीजिए, वो भी सेलुलोज डिकम्पोजर है। और भी जो है बहुत सारे IRI और जो हमारे बायो फर्टिलाइज़र, नेशनल बायो फर्टिलाइज़र रिसर्च सेंटर गाज़ियाबाद है, उन्होंने भी डेवलप किया है। आप उसको लेके घोल बना के स्प्रे कर दें, या आप डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल साइंस एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के में आ जाएं, BAU में, वहाँ आप अगर अग्रिम आदेश देते हैं तो सेलुलोज डिकम्पोजर फंगल कल्चर विश्वविद्यालय भी उपलब्ध करा देगा। समस्या ये होती है कि अगर हम बना के रख नहीं सकते, अगर बना के रखते हैं तो जिसके ऊपर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं सेलुलोज डिकम्पोजर को, चाहे वो मेज ब्रांच हो चाहे वो मिलेट हो, वो विदिन ए वीक पूरे को खा के ख़त्म कर देता है और डिस्ट्रॉय हो जाता है अपने आप में। तो अगर आप आदेश ऑर्डर देंगे तो इसको बनाया जा सकता है और इसको आप घोल करके छिड़काव कर दें विदिन 40 डेज़, 40-45 डेज़, ये उसको डिकम्पोज करने के लिए कैपेबल है। मॉइस्चर कंटेंट वहाँ होना चाहिए और पूरे को ये सड़ा देता है, लेकिन इसको करने की आवश्यकता है। और जो वेस्ट हो रहा है उसे हम यूज कर सकते हैं। रेजिड्यू में सबसे ज़्यादा पोटेशियम है, देन फास्फोरस है, देन नाइट्रोजन है। तो ये जो हमारा कंटेंट है ये हम वेस्ट कर देते हैं। थोड़ा सा पोटेशियम सॉइल को मिलता है लेकिन नाइट्रोजन लॉस होता है, फॉस्फेटिक लॉस होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट जो भी प्लांट पार्ट में है। आप जानते होंगे कि ग्रेन में न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन कम होता है कंपेरिजन देन प्लांट पार्ट, तो उस प्लांट पार्ट को हम वेस्ट करते हैं। उसको लेकर अगर हम उसी को इनकॉर्पोरेट कर दें तो जो न्यूट्रिएंट माइनिंग हो रहा है, हम डाल रहे हैं कम, निकाल रहे हैं ज़्यादा, वो हमारा बैलेंस हो जाएगा।
Then biofertilizer, it is a important component of the integrated nutrient management, especially rhizobium culture for the pulse germinal seeds, azolla and BZA, Azotobacter, Azospirillum, phosphate solubilizing microorganism, and herbuscular mica, mycorrhiza. These all things is a component of the integrated nutrient management. So it is for your knowledge. It may be it's comes in the your next other courses. So you can we can here try to give a message for the INM, that is integrated use of inorganic, then organic plus biofertilizer. Then as per need you can add soil amendment and micronutrient as per requirement. If deficiency is there, then you need this micronutrients. It is a best management practices for सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. अगर आप चाहते हैं कि क्रॉप की प्रोडक्टिविटी भी बढ़े, सॉइल की प्रोडक्टिविटी बनी रहे, सॉइल की उर्वरता क्षमता अगर ख़त्म हो जाएगा तो आप कितना ही फर्टिलाइज़र डालेंगे वो प्रोडक्शन नहीं देगा. आप देखें पंजाब में एक ज़माने में पूरा स्टेट को उन्होंने गेहूँ खिलाया, रोटी खिलाई, लेकिन आज उनका प्रोडक्शन जो है वो घट रहा है और स्टेटिक हो गया है. तो उस कंडीशन में अगर आप INM का यूज़ करते हैं, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं, तो न केवल आपका उपज बढ़ेगा बल्कि मिट्टी का जो हेल्थ है, सॉइल प्रोडक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीज. थैंक यू.